मेरा एक्सपीरियंस वंडरफुल रहा सर। मेरी ये प्रॉब्लम जो शुरू हुई, मुझे फटीग था, मेरी वाइफ को जीईआरडी हो गई थी। 2016-17 की बात है। तो फिर मेरी सिस्टर जो कैलिफोर्निया है, उसने मुझे डॉक्टर बर्ग का रेफरेंस दिया, तो फिर मैं उधर चल पड़ा। तो वो मैं करता रहा उनसे, और फिर कीटोसिस में चला गया। ये बुक्स ऐसी बहुत सारी डाउनलोड करके, प्रिंट निकाल के ये रेसिपीज करता रहा। प्रॉब्लम आती थी यार, करें क्या? अब वो पार्मेजान चीज कहाँ से ढूंढ के लाएं, और ये करना है वो करना है, तो उनका ये सॉस है जी फलाना, उनकी वो क्या कहते हैं, विनेग्रेट्स है उनके, वो हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता। एलसीएचएफ में आके तो ये सब खत्म हो गया। मुझे पता चल गया कि इतना प्रिसाइज, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। वो 20 ग्राम पे रिस्ट्रिक्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। नॉर्मल रह के भी टाइम लैग बढ़ा के बड़ी आराम से आप वही चीज अचीव कर सकते हो एलसीएचएफ में। कि वो इतनी दिक्कत, वो डिप्रेसिंग हो जाता था कीटो वाला। तो वो मतलब खत्म हो गया सर। मैं वेट आपको बताया, मैंने लॉस किया है, 7 किलो वेट लॉस हो गया। और ब्लड पैरामीटर्स तो कमाल के हैं। इवन साथ के जो 5-6 दोस्त हैं जो मोटे हो रहे थे, वो सब सेट कर दिए हैं। वो भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाइफ में आफ्टर 45 अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रेजुएशन में है। तो सुबह भी सैर हो रही है, शाम शाम को भी सैर हो रही है, पूरे मजे हो रहे हैं। वो कहते हैं अब जो कमा रहे हैं उसका एंजॉय कर रहे हैं, नहीं तो आइसक्रीम को देख के पीछे हो जाते थे कि यार कैसे खानी है कैसे नहीं खानी। तो अब फुल एंजॉय में है सर। थैंक्स टू यू, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। मेरी जो बेसिक रेफरेंस नॉलेज थी, उसको बड़ा इम्प्रूव किया है। जब वो देखते हैं कि भैया उसका 8-10 किलो गया, तो अब पूछते हैं यार थोड़ा बता देना कैसे करते हो। मैं कोई बात नहीं, आपको गाइड करेंगे। आप पहले मेंटली तैयार हो जाओ। एक बार आपका मेंटल फ्रेम तैयार हो जाएगा, आप करना चाहोगे तो आप कर लोगे। और अंदर से आवाज आनी चाहिए मुझे करना है। तो द होल क्रेडिट गोज टू यू सर। अगर मैं उनको बता रहा हूँ तो मुझे लगता है कि एसडी सर ही बता रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ लाइफ का आपकी वजह से। Hello, good evening, sir. Sir, I would like to thank you because this has been an enormously knowledgeable platform. And I wouldn't say we have made very, very big change in our lifestyles because my parents are above 70. But yes, we are going slow and steady. And one good thing that I can tell as of now is my father has stopped taking all the antacids. It's been a almost 1.5 gap since he started the all the regimen as told by you. So this is really, really great because all these years he has had a very bad history of digestive issues, but now for the past 1.5 or maybe 2 months, he's not on antacids at all. There is an acid reflux problem, but it has minimized to a greater extent. And the knowledge that you provide, even because my father is, he will, whatever it comes his way, he will not take it on your face value. He will first go and research, and he has some good words to say about you, that the research is very thorough. And it's because when you tell somebody what is the reason behind what you are telling, it is easier to follow for a person who goes by logic. Otherwise, it's like herd mentality. Somebody else is doing, let me do it also. So he's not like that. So that is very, very helpful for families like us. And we haven't done any blood reports as of now, but we will take it slow and steady. We are on that path, and we will surely, go, because at this age, making some drastic changes in their lifestyle, I don't know, digestive issues already are there, but we are hopeful. And my mother especially, father is very, very into, he's very self motivated person who takes all this on his own. For my mother, it's like a huge thing. We have to push her. She thinks, no, everything is okay with me. But yes, she has started on the supplements, and the lifestyle change is very minute as of now. But I'm hopeful it will continue to be on the upward scale, upward graph in the coming days. And we are all very thankful to you. So most of the thing, like everyone said, what other I want to mention is कि जब मैं मतलब जब मैं वर्कशॉप्स अटेंड कर रही थी, तो शुरू में क्योंकि मैं हेल्थ में लास्ट 2 ईयर से सात्विक लाइफस्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट लाइफस्टाइल आई वाज फॉलोइंग। तो जब मैंने कम से कम 15 to 20 वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे मैंने, लेकिन जब मैंने आपका वर्कशॉप अटेंड किया था तो आई फेल्ट लाइक गट फीलिंग कि जितने भी मैं डॉक्टर एरिक बर्ग और सबको देख रही हूँ उससे बहुत रिलेटेबल है। आप एक्चुअल साइंस के बारे में बता रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग वर्कशॉप तभी अच्छी देते हैं, ऐसा नहीं था कि उनका भी ऐसा था कि खराब था, लेकिन हाँ वो सिर्फ बताते हैं कि आप ऐसा करो।
लेकिन आप एक्चुअल में कि आप ऐसा करोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, आपने वो नॉलेज दिया। उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है, वो करने का मोटिवेशन आता है। अदरवाइज आपको मोटिवेशन कभी नहीं आएगा, आप सिर्फ सुनोगे उस चीजों को। माइट भी आपका वर्कशॉप 5 दिन का है तो आप 5 दिन फॉलो भी करोगे, लेकिन उसके बाद फॉलो नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं हो। तो वो जो हर सेशन होता था ना, वो इतना पैक्ड होता था कि अब लगता था अब तो भी नहीं करना है। अब वी नो कि व्हाट हैपेंस व्हेन कार्ब गोज इनसाइड द बॉडी। तो उस नॉलेज से बहुत बहुत मोटिवेशन आता है। तो आई फील कि वो एक बहुत बड़ा चेंज था कि आपकी वर्कशॉप में वो बात थी कि फील आया कि हाँ इसको अटेंड करना चाहिए। एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी सबको सबको तो मैं वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करती थी। वहां पर ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा फैट को अवॉइड ही कर रही थी ऑलमोस्ट। तो जैसे ही मुझे यहाँ पर जो नॉलेज एक्वायर हुआ कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं वो फैट से ही बने हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मुझे फैट खाना चाहिए। और जब से मैंने घी खाना शुरू किया है, मतलब मेरे खाने में इतना सारा टेस्ट आ गया है। मैं पहले से ही बहुत अच्छी रेसिपीज क्रिएट करती थी, अब तो और अच्छी रेसिपीज क्रिएट कर पा रही हूँ। तो आई वॉज सो हैप्पी कि नाउ आई कैन ईट लाइक एटलीस्ट घी। तो बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स को तो मैं अभी भी अवॉइड ही करती हूँ, बिकॉज मुझे अडल्ट्रेशन का कहीं ना कहीं रहता है क्वेश्चन मार्क। बट स्टिल कि वीकेंड के अंदर कभी कभी चीज खा भी लिया तो मुझे बुरा नहीं लगता। पहले क्या होता था, एकदम ऐसा लगता था अरे ये तो नहीं खाना है। बट नाउ आई फील कि चलो एक सैंडविच खा सकती हूँ मैं। और मैं पनीर खा सकती हूँ कभी कभी, इट्स ओके, मैंने बाहर भी खाया तो अभी वो चीज बहुत चेंज हो गई है। तो मेरे खाने में अभी बहुत सारा टेस्ट आ गया है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज आ गई है। बाहर जाती हूँ तो बाहर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो गया है। Actually, when I was scrolling over Insta, I think Insta or Facebook, I don't remember. I just found the Tello squash. And as Chitra ji told, even I have been trying, many diets, many workshops I've attended, not 15, 20, maybe two or three. पर हर बार क्या होता है, ये जो डाइट कहते हैं, इट्स वेरी बोरिंग एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकली समथिंग विच वर्क्स आउट एंड क्रेविंग्स बहुत होता है. देन आई गो बैक टू ओवर ईटिंग एंड दिस साइकिल गोज ऑन. And I was admitted for COVID last in 2022 for a week, and after that health had completely gone for a toss. So I resorted to bouts of eating, and even after so much of eating and weight, there was no energy inside. Energy deficit was there and all practical problems. तो पहले तो ये जब मैंने एनरोल किया था, when I came to know about this thing, insulin resistance, this leptin, ghrelin and all, I was just getting to know about all of that. So it was very exciting for me. Very exciting in the sense, none of the nutritionists or general people who give you a diet don't talk about all of these medical conditions, and they don't talk about healing the body as such. सबको ये होता है कि आप पैसे भरो, बस वेट लॉस करना है, महीने के लिए हम 3 kg करेंगे, 5 kg तक करेंगे, या कहीं कहीं जगह पे 1 kg का दे हैव अ फिक्स्ड amount for losing every kg of weight, because then finally I understood that that's exactly not what I'm looking for. I'm looking for a overall healing where I can get my energy back, and so it was very exciting initially, right from the start. This was very exciting, and as Chitra ji again mentioned, I would take all the references. Discovering ghee, because I'm a person who loves ghee, this fat rich food and all. So, and it was very doable, and the cravings have completely gone. Like for both of us, we would keep saying अभी तो पूरा खाना खाया, अभी फिर भी लग रहा है कि फिर खाने के साथ कुछ ले लें, फिर ड्राई फ्रूट्स लिया, फिर ऊपर से चाय लिया, कॉफी. It used to keep going. पर अभी after following this, we have completely restricted, and two or three episodes, and it's quite filling, and काम भी काफी आसान हो गया है. That's why I pulled him into this, because I've seen that I've not been successful in doing it all for myself. So I thought you will also do it with me. He has blood pressure. Actually, he is diagnosed with blood pressure. So he was on the verge of getting into pre-diabetic, diabetic, that brother sister, heart, blood pressure, diabetes, and all of that. So I think it's a lifesaver, and it's actually an asset that we have acquired, because this knowledge is actually equal to any physical asset, because it's going to be for lifetime. So thank you so much. What happens is, इसमें एक चीज जो सीखा है कि जो acceptability है ना, that is more important. See, the first thing is we never accept that we have a problem. So उसमें क्या रहता है ना कि we never go to a doctor. I never go to a doctor. मुझे लगता है वहां जाऊंगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, तो फिर जितना हो सके अवॉइड करो. तो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या था, जब आपने ब्लड रिपोर्ट दिया, आपने मंगाया था, वी वर एक्चुअली इन इंडिया एट दैट टाइम, एंड ऐसे वी आर ईटिंग हेवीली, नो डिसिप्लिन, नथिंग. मैंने कहा इस टाइम पे कराओगे तो सब हाई आएगा ये सब, या फिर वो दवाई पे लगा देंगे.
तो शी नहीं इसी टाइम को हमको करना चाहिए, दिस इज डिफरेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड व्हेन वी सेंट all our reports and when we got the responses, it was really an eye opener for both of us actually. फिर हमने जब आपका डाइट शुरू किया, अभी 45 डेज हो गया है, बट विद इन अ वीक इटसेल्फ वी कुड स्टार्ट सीइंग द प्रोग्रेस, मतलब एनर्जी लेवल्स वापस आ। सी आई डोंट नो इन टर्म्स ऑफ ब्लड एंड ऑल कितना इंप्रूवमेंट है, क्योंकि अभी तो मैंने करा ही नहीं है, बट वन गुड थिंग इज लास्ट वीक आई वाज सिक, आई हैड वेरी हाई फीवर फॉर वन डे, पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, बट एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं हुआ, एंड विद इन अ डे द बॉडी रिक्यूब्ड। अगर ये पहले होता तो कम से कम 4 दिन लेट के दवाई लेके एंटीबायोटिक लेके, एंड देन नथिंग वुड हैव एक्चुअली प्रोग्रेस्ड, And actually it would have worsened, like fever से फिर throat से phlegm, फिर but they take within a a full day cycle the actually. entire problem is solved. Second is even at work we don't crave, मतलब I'm a late sitter unfortunately, but उसमें भी क्या रहता है कि 5 बजे के बाद you start, and this is Gulf, right? Gulf में you have sweets, chocolates, dates, ये flowing सब in actually. पड़ा रहता है ऑफिस में, and we used to start eating, after 5 everyone used to pounce, क्योंकि एक craving शुरू होता है वो stress के साथ, but अभी last 40 days nothing. So the first thing, what I've learned here is we need to accept that there is an issue, and we should not overlook just for the sake कि यार ये सब ऐसे ही time pass and other things. Because we have to take care of our health, we have to heal ourselves, and I think we are on the right path. So, and I've also already started referring my friends and all, so maybe they will get in touch with you. So who are already, क्योंकि एक बार मैं ट्राई करके जब मुझे बेनिफिट दिख रहा है, then only I am actually referring my friends. So I hope the entire community should actually take this benefit and try to stay away from medicines and all, and rather heal themselves internally and both externally. So that's the lesson that I've learned. So And thank you. one thing to add, sir, actually, मैं तो काफी regret करती हूँ कि why we moved to Gulf. It's always inversely proportional. Money grow और पर health is going for a toss because we didn't know the right way of doing a diet or getting. So I cannot thank you for giving us the knowledge. अभी तो at least एक hope आया कि yes, we can still revive our health. We can still get back, the energy levels. क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मूविंग आउट ऑफ इंडिया, मुझे लगता था कि यहाँ की लाइफस्टाइल, नाउ वी आर इन मस्कट, दिस प्लेस इज स्टिल बेटर देन वी वर अर्लियर इन क्यूवेट फॉर 13 years. It used to be extreme temperatures, dust, it's not at all feasible for you to have an outdoor. You're always indoors and all of that. But again, I'm telling you, from anywhere, any part of the world, if they follow, this kind of a diet and the knowledge that you give, so all of them can have the hope that they can, get back the health. So and thank more you so importantly, बाल नहीं गिरे इस डाइट से, much. हाँ, क्योंकि exactly. पहले एक बार वो क्या हुआ था, वो दिख रहा है इसलिए मैं, क्योंकि पहले क्या था, कोई एक डाइट एक बार किया था, एक किसी ने बोला था और वी फॉलोड इट, वेट तो ऐसा उतरा 3-4 किलो 5-6 दिन में उतर गया, एंड वी वर सो कॉन्फिडेंट, उसके 4 दिन बाद भाग गया। तो नाउ बट इन दिस डाइट एटलीस्ट I can see that I'm not losing. No, that was a no protein diet. अब भी पता चला कितना foolish थे, मतलब we didn't have any basic knowledge. ऐसे blindly follow करने से, it doesn't work that way. So I appreciate you, as Chitra ji said, the sessions you are giving keep us bounded actually. As we know more information, we are still on the track. अब कार्ब देख के लगता है अब कोई खाता है, it's not right on our part to judge, but हम लोग को लगता है it's a big crime that you're करें, इतना कार्ब्स खाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए. But we can't say it, and we cannot judge also just because we are doing it now. पर वो लगता है कि सबको ये information जानना चाहिए. Everyone, every person, every man or every human being should be aware of this information. As Priya ji also said, this should be taught in schools, or probably, sir, you should, I think, start conducting workshops for the benefit of people in corporate world, especially. Corporate world में जाके, I think आपकी help वहाँ पे भी बहुत जरूरी है. Definitely. Please आप सोचिए so that big mass gets benefited. Thank you Thank for you so everything. much. The purpose for joining this workshop is for educational purpose, sir. क्योंकि आई एम ऑलरेडी न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, जैसे मैंने आपको कहा था पहले. बट मेरा ऐसा था कि क्लाइंट से डील करने का जो था ना, तो दो आई हैव नॉलेज, बट इतना डीप में कन्विंसिंग नॉलेज नहीं था, क्योंकि शुरू शुरू में ही रिसेंटली आई हैव बिकम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट. So to get that firm hand on nutrition, and I have always wanted to work in this field only. So I was searching like anything, and इसलिए फिर I have joined, and it was the right choice I have ever made.
So I'm very happy the knowledge I have gained from each and every session, right from your this previous workshop. आपके जो शुरू के जो free workshop थे, that too was so full of information and right information. And ये rarely मिलता है. Means when it comes to nutrition, I'm working as a faculty also. Food nutrition and dietetics faculty भी हूँ मैं. But the curriculum there is exactly opposite. And what they taught us that student को वो क्या बताते हैं, तो कीटोसिस के disadvantages बताते हैं. Exactly opposite. So, and I want to create that awareness among people. So for that, the main purpose यही था कि और learn करना है आपसे इस workshop से, इस session से, and maximum learning करके spread करना है ये knowledge. And it was really fruitful for me. And सर मुझे है ना इसमें और करना है, deep dive करना है, और means वो कहते हैं ना subject matter expert बनना है. So I want to be in this field only. Where I am right now, यहाँ से अभी जहाँ भी देखती हूँ ना, तो पूरा false knowledge है. Right knowledge लोगों को है ही नहीं about nutrition. एंड मैं अभी ऐसा है कि मुझे पता है, लेकिन मैं आर्ग्यू नहीं करती हूँ क्योंकि उनके दिमाग में वो फिलहाल बैठा है. बट soon means I also do my webinars and all. So थोड़ा थोड़ा मैं शेयर कर रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ राइट नॉलेज, बट उसमें और मुझे डीप डाइव करना है. तो फॉर दैट ये बहुत हेल्पफुल था. तो मेरे लिए तो ये शुरुआत करी है आपने जर्नी सर, एंड आई जस्ट होप दैट आई हैव योर what should I say, your blessings and your आपका साथ रहे. I would like to study more and get into this in such a way कि I would say that for me you have heralded a start for revolution. And I need that revolution at least to start with my family and then take it around to everybody. तो मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था सर ये वाला. एंड आई एम एक्चुअली वेरी सैड कि इसके बाद सैटरडे क्लास नहीं लगेगी. Actually grateful to you क्योंकि I have shown my reports to you also. So that was actually a remarkable improvement in all the blood markers which I was not expecting. मुझे in fact आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन मैंने लिया ये on 11th I took my reports, और उसके previous day पे I was not in town and I had a meal outside. अभी बाहर जाते हो तो तभी तो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते ये सब चीजें, लेकिन उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई थी एज अ चीट मील, एंड वो मैंने 2-3 स्कूप्स लिए उसके. तो आई वाज लाइक वंडरिंग कि अभी तो मेरा गया सब रीडिंग क्योंकि खाने तक पता नहीं चला. खाने के बाद एहसास हुआ कि अरे ये तो 11th में, इट इज ऑलमोस्ट 11th of September is going to be almost like 3 months, and that's the time when I have to get my reports so that मुझे मालूम पड़े कि बाबा अपना प्रोग्रेस क्या है करके. तो when I did it on 11th, I was surprised to find that all my markers were in place. और जिस दिन वो ये लिया था मैंने, मतलब जो आइसक्रीम खाई थी उसके बाद 2 hours पीपी जो मैंने लिया था रात को, अलार्म लेके मैंने पीपी लिया था क्योंकि तभी आई थिंक 1:15 बजा था. तो this thing reading was like 244, okay, which was very high. It was never in that region. कभी भी 140-130 के बीच में ही रहता है वो. But next day morning when I saw it, it was like again जैसे आपने वो ब्लड रिपोर्ट देखा ही रहेगा, it had come down to a normal 122 और वो 6.6 वाला HbA1c हुआ था. And what was more surprising for me was the triglyceride level of 128, which I have never achieved in my life. मतलब बहुत, मैं हर 6 महीने वो करता हूँ, but 128 was like shocking for me. तो मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी, पहले जैसे क्रेविंग्स नहीं है. So I should say that the entire credit goes to you and your program. सिर्फ एक ही है कि I want to increase my lean weight, क्योंकि in the process क्या हुआ, I got a 6-pack. Actually I got a chiseled face, but अपने आप पे chiseled face को देख के लोग बोलते हैं अरे तू बीमार है क्या. So that is one, it's a social
एक प्रॉब्लम या स्टिग्मा बोल सकते हैं आप, विच यू कीप ऑन फेसिंग. So उसके लिए my next objective will be to increase a lot of lean weight, and as I told you that I am a very serious gymmer. So one thing which I want to share with everybody out here is कि for this kind of a problem, for you to have quicker results, आपने जो resistance training की बात की, at least मुझे, बाकी के लोगों को भी शायद आपने की है, that is going to be playing a major role. Resistance training is going to play a major role. So whoever is not working out should be seriously working out, is because body composition को ठीक करने का वही एक तरीका आपको पता है. So on a personal level, I would want to put in at least 2-3 kgs of lean weight. मुझे पता नहीं वो कितना आसान हो या कितना difficult है.